Hello students. So today we'll discuss the exercise of chapter respiration in plants. So first of all we have multiple choice question. So first we have glycolysis. It is a process in which glucose is broken down into pyruvate. So C option. One same common function is performed by stomata and lenticel. Both help in exchange of gases. So both help in respiration. Anaerobic respiration occur normally in Baker's yeast. ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. डू द प्लांट्स रेस्पायर ऑल डे एंड ऑल नाइट और ओनली ड्यूरिंग नाइट? सो दे रेस्पायर ऑल डे एंड ऑल नाइट. Next we have named the following. So energy currency of cell is ATP. Oxidative breakdown of carbohydrate to release energy. This is respiration. An organism which respire anaerobically throughout its life. Yeast. कॉमन फेज इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ऐसा स्टेप जो दोनों रिएक्शन में सेम है, ग्लाइकोलिसिस. फर्स्ट स्टेप. एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, अ केमिकल विच रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. सोडा लाइम. देन वी हैव ट्रू फॉल्स. एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स 138 ATPs. रॉन्ग है ये, ओनली 38 ATPs होते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स यील्ड लैक्टिक एसिड. फॉल्स, क्योंकि वो एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में तो इथाइल अल्कोहल बनती, तो ये रॉन्ग है. कार्बन डाइऑक्साइड रेडिली डिजॉल्व इन लाइम वाटर. यस, दिस इज ट्रू. ऑल लीव्स ऑफ अ ग्रीन प्लांट नॉर्मली रिस्पायर एनएरोबिकली एट नाइट. फॉल्स, हमेशा एरोबिकली ही रेस्पिरेशन होती है ग्रीन लीव्स में. आगे है हमारे पास, लुक हियर, फुल फॉर्म ऑफ ATP एंड ADP. ADP is adenosine diphosphate. ये आपको पता है, adenosine triphosphate. So you need to find all these questions by yourself. We have already discussed all these things in class today. Then we have, can cell respiration occur in any organism at temperature of 65 degrees? The answer is no. Why it is no? Because at this high temperature, the enzymes which will control the reaction, they denature. Denature का मतलब वो डैमेज हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, and ultimately reaction cannot continue. Then we have Phillips. Lenticels are the opening found on older stem. Glycolysis occur in the cytoplasm of the cell. Glucose is a respiratory substance. Rate of photosynthesis is more than the rate of respiration in the daytime in the case of green plants. Pyrogallic acid is a chemical which absorbs oxygen of the air. Last is, mercury is used to create vacuum to show anaerobic respiration. So that was all for today. Rest of the diagram based question, these are already given in your book. Go through the experiments and try to find the answers. Every answer is already given inside the experiment. So okay students, good luck.